Similarly, if we now we are live on YouTube also. If you divide any ratio by the same non-zero number, तो इसको divide करेंगे क्या मिलेगा 3/6. Again, according to this statement, 6/12 is equal to 3/6. ऐसा है क्या? Again, cross multiply, you will come to know whether they are equal or not. Sir, we cannot hear you. So we can't hear you. So you're not audible. हाँ, अभी मैं बोल ही रहा था. Okay, next concept that we have to learn in this chapter, that two ratios are given, A is to B and B is to C. From these two ratios, you have to find A, B, C. कैसे पता करेंगे? So we can see that A is to B is given in this, which is 2:3. और second क्या दिया हुआ है? B is to C, which is 5:2. अगर आप देखो closely, you will see that B has appeared twice. B अगर 2 बार आए तो दोनों बार सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है. यहाँ पे B is 3, here B is 5. It's not same, not similar. Exactly same होना चाहिए. हम क्या करेंगे सेम करने के लिए? दो मेथड है. एक तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. अगर मैं इस पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 2/3 इंटू 5/5, और इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम हो जाएगा. दैट इज वन मेथड विच इज traditional method, but we are going to use the trick. So what is the trick? Write ratio like this and multiply like opposite n. This is opposite n. ऐसे मल्टीप्लाई करना है. पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस दोनों को, फिर इस दोनों को. मैं बोल रहा था पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो दिस लुक्स लाइक अपोजिट n. पहला जो आएगा दैट इज C, ये जो क्रॉस वाला होगा दैट इज B, और ये जो स्ट्रेट होगा दैट इज A. और आपको आंसर मिल जाएगा. ट्राई कीजिए. 10:15:6. हाँ. ठीक है. सो योर आंसर विल बी 10:15:8. सॉरी 6. दिस इज योर आंसर. बहुत बार आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तब. दिस इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सो दिस इज आवर आंसर. अंडरस्टूड? एनी डाउट? No, sir. No, sir. Sir, can you repeat? Write ratio like this and multiply like opposite n. Opposite n, and you will get the answer. Okay. Now this was related to 3 ratio. अगर 4 रेशियो रहे तो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है. You can see A is to B, B is to C, and C is to D is given, and we have to find A is to B is to C is to D. 4 ratios. कैसे करेंगे? तो first thing you have to write A is to B, B is to C, C is to D. 3 रेशियो लिखा हुआ है, इसके सामने लिख देंगे 3, 4, 8 and 9, and then 2 and 3. now इसके लिए रूल इज डिफरेंट. क्या है रूल? हमें A पता करना है तो वी हैव टू डू सीधा मल्टीप्लीकेशन, A इंटू बी इंटू सी. यहाँ पे A इंटू बी इंटू सी. B फाइन के लिए B B C, C के लिए B C C. तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ. A तो बहुत आसान, A और D फाइन करना बहुत आसान है. A के लिए क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में आपको मल्टीप्लाई कर देना है. इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आ जाएगा A. ओके. और इस तीनों के स्ट्रेट लाइन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आ जाएगा D. A and D is very easy to find. Yes. Now we have to find B and C. तो हमें क्या करना है, we have to start from this corner, और हमें इस कॉर्नर पे खत्म कर देना है. So to find B you will multiply this. इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, that is B B C. You can see this is B, this is B, and this is C.
So this will give you B. 64. Okay, and then we will multiply. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एंड करना है, बस बीच में ये आएगा. It will give you C. You will get A, B, C, D. है समझ में? A कैसे पता करेंगे? स्ट्रेट लाइन में मल्टीप्लाई कर देंगे. To find D again you will multiply in a straight line. To find B, इस कॉर्नर से स्टार्ट करके इस कॉर्नर पे एंड करना है. बीच में ये नंबर आएगा B. अगर B निकालना है तो B 2 बार आया, you can see. अगर C निकालना है तो C 2 बार आएगा. We'll start with B, end with C. B निकालना है तो B आ जाएगा, C निकालना है तो C आ जाएगा, and you will get. अब ये ट्राई कीजिए, you will get the answer. A, B, C, D. Try. Sir, can you repeat the C1? If you want to find C, it will be BCC. BCC. Or you will always start from this corner, you will end with this corner. This is B, this is C. एक और बार इस पूरे में C कहाँ पे है आप देख लो. ये है ना C. We'll do BCC. This is C. और अगर हमें B निकालना है तो we'll do BBC. Okay, sir. Someone in the YouTube chat box is saying scaling method use करेंगे sir. What is scaling method? If you do this, you will get the answer. बहुत मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए. मुझे ये सबसे इजी लग रहा है, आसान लग रहा है समझने के लिए भी. That's why we have used this. तो ये हो जाएगा 3 into 8 into 2. 48. 48, 64, 64, 78, 108, 108, 78, 22. हाँ, 108. 108. Now you will simplify. Simplify this. Simplify this. I think every number is divisible by 4. Yes. Yes. It will become 12, 12, 16, 16, 18, 18, 27. and 27. हो गया? So this is our answer. So this is 12 is to 16 is to 18 is to 27. Now in this only they can ask you what is the ratio of A is to D. क्या होगा आंसर? 12 is to 27. No, simplify, simplify. 12 is to 27. 4 is to 9. 4 is to 9. 4 is to 9. Yeah, correct. They can ask you what is B is to C. B is to C. Sir, 8 is to 9. Yes, A is to C. 6 and 9. 6 is to 9. 2 is 2 is to 3. 2 is to 3. Yes, very good, very good. अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है? Yes. चलिए. Okay, now there is third type where if ratios are given in fraction form, how to convert that into normal whole number. For example, you can see ratios are 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4. यहाँ क्या करना है? There are two steps. Step 1 is take LCM of denominator. Take LCM of denominator. This is step 1. And step 2 is multiply every number with LCM. Multiply with LCM, you will get a ratio which will be in whole number form. So what is the LCM of denominator? 12. 12. So first ratio would be 1 by 2 into 12. Second would be 1 by 3 into 12. And third will be 1 by 4 into 12. क्या हो जाएगा? 6 is to 4 is to 3.
ये हो जाएगा 6 4 3. So A is to B is to C will be 6 is to 4 is to 3. आसान है, समझ में आ गया आपको क्या करना है. Yes, sir. अगर फ्रैक्शन में दिया है तो एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का और सारे नंबर को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे. विल गेट द रेशियो विच विल बी इन नॉर्मल सिंपल फॉर्म, होल नंबर फॉर्म. ठीक है. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिवाइड 60 रुपीज इन द रेशियो 1:2. सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. $20 60 रुपीज को डिवाइड करना 1:2 में. बहुत मेथड है, ऐसा भी लिख सकते हैं. रेशियो इज x and 2x एंड x plus 2x इज इक्वल टू 60. एक हो जाएगा 20 और दूसरा हो जाएगा 40. डन. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन निफ्ट इज गोइंग टू आस्क यू. बिल्कुल इसी तरह के सवाल आते हैं निफ्ट के पेपर में. ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2. Ten is to nine. Excuse me, sir. Excuse me, sir. यस यस. सर ऊपर वाला में हमने x की वैल्यू 20 निकाली थी, तो सर जब हम x की वैल्यू 20 निकली थी तो सर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, कि 1:2 रेशो में है. तो जब हम इनटू करेंगे तो 20:40 निकलेगा. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, सिंप्लीफाई क्यों करना है. आपको पता करना है कि माइक को कितने रुपए मिले और जॉन को कितने रुपए मिले. माइक गॉट 20 रुपीज, जॉन गॉट 40 रुपीज. अब Okay, इसका sir. रेशियो निकालो 1:2 ही आता है ना. Yes, sir. Yes. हाँ बस. Thank you. So 1:9. 10 1:9. is to 9. Sorry, 10 is to Total number of students in a class is 95. 10 is to 9. Total number of girls is 45. So I can say that girls is 45 and boys 50. Yes. We have to find the ratio of total number of boys to total number of girls. Boys to girls ratio क्या होगा? 10 is to 9. 50 10 by raised to 9. 45 10 is to 9. 10:9. बस हो गया. यही होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए ये सॉल्व कीजिए. Take time and I want the correct answer. Now you have 12 more days for NIFT. बस 12 दिन बचे हैं आपके पास. सैटरडे को मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ. 5th Feb को. So you have just 12 days.
Yes, the ratio of money with Ram and Gopal is 7:17, and Gopal and Krishna is 7:17. So Ram and Gopal is 7:17. Gopal and Krishna. Gopal and Krishna is 7:17. You can see Gopal has appeared twice. एक बार 17 है, एक बार 7 है, तो हमें उसको इक्वल करना है। तो 3 रेशियो की बात कर रही है। टू मेक इट इक्वल आई विल डू अपोजिट एंड, ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, राइट। कितना हो जाएगा रेशियो ऑफ राम गोपाल एंड कृष्ण? 49 राम is to Gopal is to Krishna will be equal to how much? 49 is to 289. ओके। यहाँ तक कोई डाउट हो आपको तो बता दो मुझे। No, sir. हाँ सर। No, sir. राम गॉट 490 रुपीज, चल। कृष्ण को कितने मिलेंगे? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो इफ दिस पर्सन गॉट 490, ऐसा लग रहा है 10 से मल्टीप्लाई हो गया है, Yes, sir. तो इस इंसान को कितना मिल जाएगा? 1190, 1190. और इसको कितना मिल जाएगा? 2890. 2890. बस, दिस इज आवर आंसर, वी गॉट द आंसर। 2890 इज द आंसर, करेक्ट? चलिए Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा साइज इंक्रीज कर दूं। बहुत आसान है, आई वोंट गिव यू मोर देन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में आई वांट द आंसर। हो जाएगा? 12:15. 2:3 and 4:5। 12:15. हमारा आंसर होगा A:2B:C will be 4 into 2 8 12 15। डन, 15. हो गया। Yes, sir. Yes. चलिए अब 4 रेशियो है यहाँ पे। A:B is 3:4, B:C is 7:5, then 5:6। You have to find A:B:C:D, 4 रेशियो। Did NIFT give any information on their website? No, sir, not yet. No, sir. No, sir. No, sir. पता नहीं क्यों, बट आई एम फीलिंग दैट हो सकता है पेपर ऑफलाइन हो जाए। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है। टुडे पेपर वाज ऑन द सेंटर, राइट? यूसीड पेपर वाज ऑन द सेंटर, घर से नहीं था। तो वी डोंट नो, एनीथिंग कैन हैपन। हाउ वाज द पेपर? टफ, इजी, कैसा था? इजी तो नहीं होता है, तो आई विल से आस्क टफ या मीडियम लेवल, कैसा था? मीडियम था सर। एग्जाम लिखने के बाद पर सर दर्द हो गया बहुत जोर का। कोई नहीं, अब सर दर्द नहीं करेगा। मुझे लग रहा है शायद हो सकता है अगर यूसीड ऑफलाइन हुआ है, ऑफलाइन मतलब फ्रॉम द सेंटर। So, but they already knew that UCEED offline होगा, तो भी उन्होंने परसों ही बोला ऑनलाइन हो रहा है। तो क्योंकि केसेस उतने ज्यादा वो है नहीं, और आई हैव हर्ड दैट इन महाराष्ट्र दे आर गोइंग टू ओपन ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस फ्रॉम टुमारो।
और महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब रहती है. अगेन आई वोंट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी. वी शुड वेट फॉर द नोटिफिकेशन फ्रॉम निफ्ट. ओके, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? 105, 140, 100. 21 is to 21 is to 21, 28 28, is to 28, 20 20 is to 24. देखो पहला वाला तो बहुत आसान है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट 105. ठीक है. दूसरा वाला कितना होगा? 140. Yes, sir. 100 100 and 120. 120 120. You can divide everything by 5. 5. Yes, sir. It will become 21, 28 28, 20 90 and 24 30. 24 Sorry, 34. 24. 24. और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, so this is our final answer. Excuse me, sir. Okay. Someone is saying I'm Delhi. audible, sir. Yes, yes. Hello, I'm हाँ audible. जी, हाँ जी. बट जो हमें रेशियो दे रखा है, जैसे फर्स्ट में बी का रेशियो 4 है बट सेकंड में बी का रेशियो 7 है, सर उसको हम इक्वल नहीं करेंगे? हाँ, इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं ना, इक्वल करने के लिए ही कर रहे हैं. अब देखो आपको ओके एक सर. ए मिला है, एक बी है, एक सी है, एक डी है. सिंगल सिंगल मिला है ना, हमने इक्वल किया है. ओके सर. ओके. So if in exam they give both like 105, 120 option और नीचे 21, 28, which one should we choose? ऐसा नहीं हो सकता ना, कैसा क्यों करेंगे वो? दैट इज नॉट पॉसिबल. Okay, sir. Someone is saying that Delhi is still on yellow alert. इसका मतलब है पेपर ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि दे विल टेक केयर ऑफ इंडिया. उनको इंडिया में सारे जगह पेपर कराने हैं. तो अगर सारे स्टेट की हालत कंडीशन अच्छी है, ओनली देन पेपर विल बी ऑफलाइन. काव्या श्री, यू फिल द फॉर्म ट्वाइस. तो एक काम करो आप, मैं आपको एक नंबर लिख के दे रहा हूँ, इस पे आप कांटेक्ट करो. और आई एम 100% श्योर आपको सब मिल जाएगा. काव्या श्री, कांटेक्ट ऑन दिस नंबर. अच्छा, how to solve this question? Solve using options. So use options and solve within seconds. ऑप्शन को यूज करो और जल्दी सॉल्व करो. So 5. Option D. ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो आपको क्या होगा ना, बहुत बार यू विल सी कि अगर ऑप्शन दिया है, हम ऑप्शन का यूज करके सॉल्व करें तो वो जल्दी सॉल्व हो रहा है. मेथड से जा रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा है. अब मेथड्स में क्या करता है, इस पे लिखता है 7x बाय 13x प्लस सेम नंबर ऐड होगा तो कोई एक नंबर फिक्स ले लेता, y प्लस वाई या कुछ, तब सॉल्व करने जाता बहुत टाइम लग जाएगा. मैं ऑप्शन का यूज करके सॉल्व करूंगा. ये अभी हम बात कर रहे थे एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट. सॉल्व दिस. एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट क्या होगा आंसर? इसके लिए आई कांट गिव यू मोर देन 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स. 64. हाँ, 64 इज करेक्ट. चलिए फिर असली अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. If 2a equals 3b and 4b equals 5c, then you have to find a is to c. Can you explain the fifth question? Fifth question में क्या था भाई? Fifth question is actually using this trick. We have learned this trick. तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को फिर से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. This is the trick. If you know this, you can quickly solve question number 5. So go watch this video again.
15:8. Wait, let everyone solve. Sir, shall I send the answer in the chat box or wait for it? That would be better if you send in the chat box. Explain question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था? नहीं, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप ऑप्शन ऐड करो, ये बहुत आसान है। 7 में अगर मैं 5 ऐड करूं तो इट विल बिकम 12, 13 में 5 ऐड करूं तो इट विल बिकम 18, सो 12 by 18 इज इक्वल टू 2 by 3। ये तो बहुत आसान था। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। हम दोनों मेथड से देखते हैं क्या आसान लगता है आपको। वी हैव टू फाइंड a is to c. 2a equals 3b. Okay, so I can say that a is equal to 3b by 2, ऐसा होगा ना। और यहाँ c का मतलब पता कर लेते हैं। It's 4b equals 5c. So b का ही मतलब पता कर लेते हैं। b is equal to 5c by 4. In this, if I put the value of b as 5c by 4, तब तो हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ। So if I do 3 और b के बदले में 5c by 4 into 5c by 4, but I think this is lengthy method. तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? This will be 15c by 4 divided by 2. Divided by 2 means multiplied by 1 by 2. So it will give me 15c by 8. A equals 15c by 8. यही होगा ना? 15c by 8. If A is equal to 15c by 8, A by c पता कर सकते हैं यहाँ से easily. A is equal to 15c by 8. A by c कितना होगा? 15 by 8. 15 by 8. So can't we simply find what is A and C and take it as ratio? That is also good option. There is another method जहाँ पे हम A is to B is to C पता कर लें और उससे तुरंत हो जाएगा। Should I tell you that method? I think that is better. Yes, sir. मैं वो बताता हूँ A is to B is to C से कैसे सॉल्व करें। I think that is better method. Okay, see, simple thing. 2A is equal to 3B. From this, what will be A is to B? क्या होगा बताइए? A किसके साथ मल्टीप्लाइड है? 2 के साथ। 2 by 2 3. into 2A and 3B cross multiplication. So A is to B हमें पता चल गया. Now we will find B is to C also. 4B is equal to 5C. So I can say that B by C is equal to 5 by 4. B is equal to 5, C is equal to 4. ऐसे भी देख सकते हैं. Yes. So A is to B and B is to C we know. Opposite and method से पता निकाल लो. 3 is to 2 and 5 is to 4. Opposite and method. So ratio will become 15 is to 10 is to 8. Right? यही होगा ना? Yes, sir. Ratio. Yes, sir. हाँ. और हमें क्या पता करना है? A is to C. 15 ये is हो गया is to A, 8. ये हो गया C. बस. अब बताओ कौन सा इजियर था आपके लिए? ये आसान था ना? Method. ये वाला सी ऐसे सॉल्व कर लो, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
three boys are aged 2 years, 4 years, and 8 years. They want to divide 70 rupees in the ratio of their ages. How much money would each get? ₹17 को 3 लोगों में बांटना है and ratio would be 2:4:8. 3 people, they in the ratio of 2:4:8, 70 rupees को डिवाइड करना है. क्या करेंगे? It will become 2x plus 4x plus 8x 8x equals 70. x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 5. So each person would get 10 rupees. और 20 क्या मिलेगा? 20 rupees 40 and 40 rupees. 40 बस rupees. हो गया. 10 rupees, 20 rupees and 40 rupees. एक और दूसरा मेथड है जहां पे एडिंग द रेशियोज हम पता करते हैं. ये XYZ नहीं करना है. So what is the first step? First step is add the ratio. If you add the ratio, it will become 14. हो जाएगा ना? So that 14 is the total. हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है. That will be 2/14 into 70. If you solve this, first person will get 10 rupees. Second के लिए you will do 4/14 into 70 and third person के लिए 8/14 into 70. That way also you can get the answer. ठीक है? Sir, isn't it easy to just simplify and do? Yeah, we have just simplified because यहाँ 70 rupees को divide करना था. कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में. I mean, just simplifying the ratio even more and adding it and dividing. Why to simplify more? You will get the same answer. Same answer. Yeah, you will get the same thing, no? Even if we simplify this ratio, you will get 1:2:4. Yes, And sir. then 70 rupees divide in this ratio, then also you will get the same answer. ऐसा देख के ही नहीं लग रहा है कि 1, 2, 4, 10, 20, 40 तीनों को ऐड करेंगे तो हम 70 हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. Answer of question number 9 was 10, 20 and 40 rupees.
काव्यश्री 500 तो गलत आंसर है. It's asking annual salary. It means salary of 12 months. Okay. The monthly salaries of A, B, and C are in the ratio 4:5:7. If C's monthly salary is 300 rupees more than that of A, तीन इंसान है A, B and C. 4, 5 and 7. सबसे ज्यादा 7 अर्न करता है, सबसे कम A. C minus A is 300. ठीक है, इसको x x x कर लें. 4x 5x 7. C minus A is 300. So 7x minus 4x is 300. What will be the value of x? x का वैल्यू क्या होगा? 100. 100. So B will get 500 rupees. मतलब B के पास 500 rupees है per month. Yes, sir. So what will be annual salary of B? 6,000. 6,000. 500 into 12. Do you have negative marking this year? वो तो हमें वेट करना चाहिए कल तक का. अभी तक नेगेटिव मार्किंग था. इफ द पेपर वाज ऑफलाइन देयर वाज नेगेटिव मार्किंग, दैट वाज 25% ऑफ योर पॉजिटिव मार्क. बट वी डोंट नो, कल देखते हैं क्या होता है. यस, I didn't understand after part 100 is equal, x is equal to 100 के बाद. if x is 100 rupees, then how much will be B? 5 into 5x, so 500. The monthly salary of B is 500. We have to find the annual salary of B. How will you find? If monthly salary of B is 500 rupees, to find annual means 1 year. 1 year means 12 months. Multiply by 12. 500 into 12, how much? 6,000. yes, sir. The ratio of 45 milliliter mixture of milk and water is in this ratio 3:2. तो आप मुझे बता दो इस 45 ml में वाटर कितना है और मिल्क कितना है. मिल्क ज्यादा है, वाटर कम है.
कितना The होगा? milk is 27 milliliter 27. and water is What 18 is milliliter. 18? वाटर इज 18 एंड मिल्क इज 27, करेक्ट। इसमें कोई डाउट है? हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड? इट मींस वी आर नॉट एडिंग एनी मिल्क, जस्ट वाटर ऐड कर रहे हैं, सो दैट रेशियो बिकम्स 2:3। मतलब बोल रहे हैं कि कितना पानी ऐड करें कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाए, 2:3। क्या लग रहा है? 2:3 मिल्क ज्यादा है या वाटर? The water. वाटर ज्यादा है, ठीक है। और वाटर नीचे में, मिल्क ऊपर में, तो मैंने मिल्क को फिक्स कर दिया 27। हम क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर। तो वाटर विल बी 18 प्लस एक्स एंड Yes. दैट शुड बी इक्वल टू 2/3। अब मुझे x का वैल्यू आप बता दो इसको सॉल्व करके। ये सॉल्व हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। सी दिस इज मिल्क, सो दिस इज फिक्स्ड। क्या चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, इसमें ऐड कर रहे हैं, वाटर में हम ऐड कर रहे हैं। वाटर पहले से 18 था, मैं उसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई प्लस साइन। सर x की वैल्यू 9 है। x का वैल्यू 9 नहीं, 2.5. अगर x का वैल्यू 9 होगा तो 1:1 रेशियो नहीं हो जाएगा? x अगर 9 हुआ तो ये भी 27, ये भी 27, तब तो रेशियो 1:1 होगा, बट ऐसा तो नहीं है। वाटर मिल्क से ज्यादा होगा। सर हमने 18 के साथ 22.5. प्लस एक्स क्यों करा? Because we are adding water, so 18 is water, so we are adding water, milk is fixed and ratio इतना होना है 2:3। 2:3। सर क्वेश्चन में बोला है कि हमें मिल्क का रेशो सेम रखना है। देख लो, रेशियो इतना रखना है हमें। मिल्क का रेशियो सेम कैसे है? पहले तो 3 था, अब 22. मिल्क 2 हो गया। फिर से ऊपर क्वेश्चन में 22.5. लिखा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। Yeah, how much water must be ओके ओके added? We ओके are सर not adding any milk, so answer will be 22.5। 22.5 milliliter, ये है आंसर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलिए, सिमिलर क्वेश्चन। Solve and write your answer in the chat box. Chat box में आंसर लिखिए। Hers, you can't say not sure. You are B.FTech student. B.FTech वाले बोलेंगे कि मुझे पता नहीं कैसे होगा, तो नहीं चलेगा। Okay, the ratio of spirit and water in a mixture is 1:3. मतलब spirit and water दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है।
स्पिरिट अगर 1 ml है तो वाटर है उसमें 3 ml, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। If the volume of the solution is increased by 25%, what is the volume of the solution now? 4 ml। अगर मैं मान लूं ये 1 ml है और ये 3 ml है, तो कैन आई से दैट वॉल्यूम इज 4 ml now? Yes, sir. Now volume of the solution is increased by 25%, it's now 4 ml, और उसको अगर मैं 25% इंक्रीज कर दूं तो कितना हो जाएगा? 5 ml। Yes, sir. इट विल बिकम 5 ml। और 5 ml में क्या इंक्रीज हुआ है? बाय एडिंग स्पिरिट ओनली, मतलब वाटर पहले जितना था अभी भी उतना ही होगा। कैन आई से दैट दिस हैज बिकम 2 ml? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब क्या पता करना है? व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर? 2:3। हो तो गया, 2:3 इज द आंसर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर नाउ? 2:3, खत्म। यस। So how did you get 5 ml? Earlier it was 4 ml and it was increased by 25%. So if you add 25% in 4 ml, you will get 5 ml. I didn't understand why you're changing 3 ml to 4 ml. If ratio is 1:3, it means this is 1 ml, this is 3 ml, or this is 10 ml, this is 30 ml, or this is 100 ml, this is 300 ml. Yes or no? You can Yes, sir. take anything. And that's why I have taken 1 ml. You can take 100 and 300 also. Ratio No, should no. be same. No, like why are you increasing it to 4 ml? No, I'm not increasing. If there is 1 ml spirit and 3 ml water, what will be the volume of the solution? Oh, okay, it's a sum. Volume will be 4 ml. Okay, it was sum. Yeah. सर आपने 25% कहाँ पे मतलब कैसे ऐड करा है? ये जो वॉल्यूम है ना 4 ml, उसमें 25% ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Tomorrow we are going to study a chapter called percentage, वहां हम सीखेंगे कि अगर 25% इंक्रीज हो गया इसका मतलब होता है 125%। 4 into 125% means 4 into 125 by 100। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको 5 आएगा। 25% इंक्रीज हो गया ना। अब मुझे बताओ व्हाट इज 25% ऑफ 4? सिंपल सा सवाल, तो उसको बोलने दो। व्हाट इज 25% ऑफ 4 ml? क्या होगा? 1 ml। Yes, sir. 25% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 1 ml इंक्रीज हो गया। पहले अगर 4 ml था, 1 ml इंक्रीज हो गया तो 5 ml हो जाएगा। यस सर। बस वही लिखा है, 4 से 5 हो गया। और लिखा हुआ है वो जो इंक्रीज हुआ है ना, वो बस स्पिरिट ऐड करने से हुआ है, वाटर हमने ऐड नहीं किया है। वाटर पहले 3 था, अभी भी 3 ही रहेगा। इसका मतलब स्पिरिट विल बिकम 2 ml। ओके सर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर? 2:3। बस। ओके, थैंक यू सर। Okay, this was ratio. Now we are going to learn proportion. What is proportion? When two ratios are equal, we call them proportion. ये देखो, अगर A by B is equal to C by D, we call them they are in proportion. और इसको ऐसे दिखाते हैं, A is to B, और 4 बिंदी यहाँ लगाते हैं, this is called proportion sign, and then we write C is to D. तो इसमें क्या होता है, जो बाहर बाहर रहते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, या यहाँ पे देख लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, A इंटू डी, यहाँ पे बाहर बाहर है ना, A एंड D आर आउटसाइडर, इस आउटसाइडर को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। B एंड C आर इनसाइड, इनसाइडर, वी कॉल देम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। B into C is always equal to A into D. So that is called proportion. ठीक है? Where A and D are called extremes, B and C are called means, the mean terms.
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन, देन थर्ड प्रोपोर्शन एंड फाइनली मीन प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम फोर्थ प्रोपोर्शन पढ़ लेते हैं। नाम से ही लग रहा है इसमें 4 टर्म होते हैं। In fourth proportion there are 4 terms. In third proportion there are 3 terms. In mean proportion there are 2 terms. Fourth proportion में क्या होगा, 4 terms में से कोई एक मिसिंग रहेगा, आपको फाइंड करना है। For example this, you can see 2:4, proportion 6:x, find the value of x. 2:x, proportion 6:12, find the value of x. Find, देखते हैं क्या आता है आंसर। इस कोई भी एक टर्म मिसिंग रहेगा, वो आपको फाइंड करना है। एंड यू नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बार बार मल्टीप्लाई होगा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा। टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस केस एंड वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस केस। Yeah, first case में what is the value of x? 12. 12, 12, correct. Second case में 4. 4. Okay, ये कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इफ 0.75 इक्वल्स x, सॉरी 0.75 रेशियो x proportion 5:8, find the value of x. हमें क्या रखना है, फोर्थ प्रोपोर्शन में देयर आर 4 टर्म्स, एनी वन टर्म वुड बी मिसिंग, वी हैव टू फाइंड दैट टर्म। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4, 6 एंड 20। इसका मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स आर गिवन, वी हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म, दैट इज x। आउटसाइड मल्टीप्लाई करना है, इनसाइड मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर। ओके, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 2, 4 एंड 20, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर? 40. 40, करेक्ट। सर इनको वैल्यू में ऐसे रखेंगे ना 0.75/5 इक्वल टू में x/8। नहीं नहीं, नो, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा पॉइंट वाला। मुझे भी क्यों नहीं आया समझ में? सर एक्सप्लेन करो ना। 0.75 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स 5/8, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब। सर इससे पहले आपने बोला कि हम ना एक साइड से बाहर वाले लेंगे, तो ए भी बाहर वाला और सी भी बाहर की साइड वाला है। सर उनको एक कौन साथ कौन सा बाहर साइड वाला है? सर ए एंड सी एक साथ है और बी और डी एक साथ है। नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत आपने पहचाना। मल्टीप्लाई करना है बी और सी को, और ए और डी को मल्टीप्लाई करना है। ओके सर, ओके ओके। हाँ, बाहर को मल्टीप्लाई करना, अंदर को मल्टीप्लाई करना। यहाँ बाहर कौन है? 0.75 एंड 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, वही हो रहा है ना। जो अंदर में उनको मल्टीप्लाई करना है एक साथ, तो 5 × x। क्या होगा आंसर? 0.2 सर। 0.2, 1.2 1.2, ओके ओके, 6/5। Okay, third proportion, as the name says, there will be 3 terms a, b and c, and formula is b² equals ac। 3 टर्म होंगे। Can you please mute proportion sign b to c? आपको दिख रहा है b 2 बार आ गया है, तो it will be b² equals ac। ठीक है,
देयर विल नॉट बी फोर्थ टर्म, तीन ही टर्म होते हैं, ए बी सी, बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी, एंड क्वेश्चन विल बी लाइक फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 5 and 20. कैसे पता करेंगे? where this 5 will be A, this 20 will be B, you have to find the C. Naveen sir, तो चार hello. Naveen sir, can you hear me? Yes sir, yes sir. Okay, okay. Hi, hello everyone. Sorry for sorry, I'm just like, you know, I have disturbed you in the class, and I just jumped in. So there is a very important announcement, Ignite India Education, especially for the YouTube, our YouTube live viewers, and for you guys also. So we have designed a unique online test series, which will be very, very helpful for NIFT online mode exam. And this we have kept in the mind, and we have evaluated all the kind of pattern and all the possibilities which may NIFT may try for the online entrance test. So this is recommended, highly, strongly recommended everyone to register for this. And more detail, Krishna sir will be he will be sharing with you. So he will be taking another session. We are also trying to do multiple tie-up with different university. So their entrance exam also we are trying for you guys to, you also appear on those exams. So you can register. The link is there in the chat box. All right. And Krishna sir may be taking another, like, you know, session before your exam, maybe in this week. And he will be explaining you how you can appear for especially designed test series for CAT and GAT papers. Also, he will be including few universities and their creative ability test and general ability test. So if anybody is interested, link is there in the chat box on the Zoom. You can fill this link, and Naveen sir, maybe you can keep, like, you know, reminding for YouTube viewers. So link is already there in the description box of the video, and also it is there on the chat box, live chat box on the Ignite India YouTube channel live chat. Yes sir. All right, guys, thank you. Naveen sir, this test, I think, like, you know, this since the whole exam will be online mode, so we have changed our own Ignite India app portal test pattern. Also, we are trying to do different tie-ups. So this will be helpful for everybody, including our student and for others. So and this will be very, very, like, you know, the easiest process to register. And also when you will join the session, you will know this will be definitely helpful and very, very affordable, I can say, like, you nominal, very, very nominal, like, you know, charges. Also, we are requesting university to give cashback and relaxation. So already you I think many of Ignite India students, you guys have appeared for the MIT exam free of cost. So similar way, we are trying to do different tie-up, and I request everybody, and I strongly recommend everybody, you just register for this, and we will get back to you. Thank you, everybody. Thank you sir. Thank you, Mukesh sir. Okay, so this is like this. So if you appear for the test, so NIFT paper will be on 6th Feb. Before that, if you appear for 2-3 papers, let's say from different universities, so you will have hand-on practice. तो आपको उस दिन पता होगा, आप पहले से कॉन्फिडेंट रहेंगे, उस दिन आपका टाइम सेव होगा, आपको पहले से पता होगा क्या करना है, नहीं करना है. So this is a very good offer for everyone. Okay, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. Okay, so question will be like this. Find the third proportion to 5 and 20. 5 is A, 20 is B. You have to find C. क्या होगा आंसर? 8 होगा. 80 sir. 80. Correct. Okay, पहले हम ये कर लेते हैं, फिर we'll discuss about paper also. Okay, and the last one is called mean proportion. Mean proportion में हमें क्या करना है?
there will be just two terms, A and B, and formalize under root AB. 1 minute, गड़बड़ हो गया. So mean proportion is under root AB. They can ask you find the mean proportion to 5 and 20. क्या होगा आंसर? 10. बस चलिए सवाल सॉल्व करते हैं. Find a fourth proportion to 5, 8 and 15. So they haven't given वो double dot इसमें. अरे बता रहा हूँ ना मैं, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है. इस तरह Okay, से भी sir. क्वेश्चन आएगा. डबल डॉट के बदले में कभी कभी इक्वल टू साइन रहता है, डबल डॉट मिलेगा ही नहीं, ऐसा रहेगा. 5:8 इक्वल्स 5 ऐसा रहेगा. तब क्या करेंगे आप? उसका मतलब भी सेम वही हुआ. डबल डॉट इज एक्चुअली इक्वल टू साइन. तो इसको कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इक्वल टू साइन, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म नहीं दिया है, एक्स फाइंड कीजिए. क्या होगा आंसर? 24. या सॉल्व दिस सेकेंड वन. पहले बताओ ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14. The fourth proposal. नहीं No, sir. this Third is third proposal. I'm afraid of maths. No, you should not be. Maths is very easy if you know the tricks. और हमने वही किया है. Is there any student in our session जिन्होंने फर्स्ट सेशन ज्वाइन किया था, उनको मैथ से डर लगता था और आज उनको डर नहीं लग रहा है? Anyone in the session? Yes, Me, sir. sir. Me. Intensity has reduced to some extent, but still I do afraid. That's why I'm just covering which are really important topics, because I'm not going to go like all the topics, but topics that you have given us day before yesterday, the list of all the topics. I'm just going through it. Yeah. 10 topics. 10 chapters in maths is more than enough. But not for B.FTech. B.FTech students have to study each and everything. Sir, Yes. in the end, can you tell the 10 chapters once I was absent? Yes. पहले इसको करते हैं. Second one, what is the answer? 12. 12. Yes, sir. The 12. Third one, tell me quickly. 20. 20. sir. 20. Okay, this one. 16. 8. So how to do Three. the 15th one? Find the third proportion to 5 and 10. Formula is B square equals AC. This Understood, is sir. A, this is B. C निकालना है आपको. Your tricks are very easy to remember. Thank you. See, by the end of the day, you should be able to solve the question within the time. Bas. Okay, quickly, last one, 17 number. 12. 12. Mean proportion under root 12 होगा आंसर. इसका आंसर क्या होगा? 8. 8. Done. Okay. Sir, हाँ जी, yes. sir, is pipe and cisterns is important for B.Day students? आप मुझे बताओ. You are the student of Ignite India since June, July. आप मुझे बताओ. Do you think it is important? Sir, I don't think so. Then you are not a sincere student. I'm sorry. अगर मैंने 3 बार पढ़ाया और तीनों बार बताया pipes and cistern is only for B.FTech and MFTech, and still you are asking, तो मुझे नहीं लगता क्या बोलना चाहिए. Actually, sir, I haven't did pipes and cistern classes, so that's why I was asking. नहीं, आपने क्लास मिस कर दिया तो वो आपकी प्रॉब्लम है. Yes, sir. सिंपल सी बात है. Pipes and cistern are only for B.FTech and MFTech. This is what I told to everyone. ये बात आपको समझनी पड़ेगी. मैं आपको फिर से एक बार लिस्ट दे देता हूँ. आपका आवाज. I'll give you the list of chapters which is important, which is not that important, but this
लिफ्ट हैज नथिंग टू डू विथ B.FTech स्टूडेंट्स एंड MFTech अदर बाकी के लिए. Okay, important chapters, topics, number system, very important, 4 to 5 questions. Then number 2, LCM and HCF, very important. Number 3, average chapter पढ़ना ही है आपको. Number 4, अभी जो हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन. Then number 5 जो आपको करना ही है, जहां से क्वेश्चन आता है हर एक साल, that is percentage. Number 6 will be profit and loss. ठीक है. 6 will be simple interest and compound interest. अब दिस इज टॉपिक जो बहुत लोगों को टफ लगता है. MFM स्टूडेंट्स कैन स्किप दिस टॉपिक. एक क्वेश्चन आता है. Sir, what about B? नहीं, सब के लिए एक एक क्वेश्चन ही आएगा, इससे 2 क्वेश्चन नहीं आ सकता. बट इफ देयर इज B.FTech स्टूडेंट, एक क्वेश्चन SI से आएगा, एक CI से आएगा. सो 2 क्वेश्चंस फॉर B.FTech. यू कांट स्किप. 8 इज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस. टॉपिक 9 इज वर्क एंड टाइम, जो पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत आसान है. बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है आपको. MFM की वर्क एंड टाइम आएगा सर? म्यूट. पुनीता शर्मा म्यूट. यस, इतना टॉपिक सबके लिए आएगा. दिस इज कॉमन टॉपिक फॉर एवरीवन, वेदर यू आर राइटिंग B-, M-, MFM, एनीथिंग, यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक्स. MFM स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरे लिए टफ है, पसंद नहीं है, तो यू कैन स्किप सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो एक क्वेश्चन उससे आता है. उसके अलावा ये आसान टॉपिक है, आपको चलना चाहिए. पुनीता शर्मा म्यूट प्लीज. पुनीता शरण, सॉरी. आप म्यूट चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि आपकी आवाज वो क्लियर नहीं आ रही. तो ये वो टॉपिक है जो आपको कवर करना है. ओके, अभी कुछ देर पहले जो गोविंद सर बता रहे थे, आई वुड रिपीट दैट. सो यू शुड ज्वाइन इग्नाइट इंडिया फॉर मॉक टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब आप वही कर सकते हो. तो उससे आपको क्या फायदा होगा? इग्नाइट इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विथ मेनी यूनिवर्सिटीज जो डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम में जो दिलाते हैं, जिनके कॉलेज में डिजाइन है. तो उससे क्या होगा? आपका निफ्ट का पेपर है 6 Feb को, राइट? Now imagine before 6th Feb you at least get to write 2 papers. At least 2 papers आपको लिखने को मिलता है. That will be online. तो इससे क्या फायदा होगा? जब आप 6th Feb को पेपर लिखेंगे निफ्ट का, तो you already will have that practice. आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे ऑनलाइन पेपर कैमरा के सामने कैसे लिखते हैं, and then you will go to write on 6th Feb. So you will have that advantage. There will be many students who will not have this advantage, that previous experience of writing paper online before the camera. So this is the good thing. अगर थोड़ा बहुत ज्यादा फी होगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल 16th को जो पेपर था, दैट वाज completely free for Ignite India students. उसी तरह if you are able to write at least 2 papers, अगर 1000 लग भी जाता है तो it's totally okay. तो 6th Feb को आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको पता होगा कहाँ क्या हो सकता है. ठीक है. B-Dash के लिए क्या, ये सारे चैप्टर सबके लिए इंपॉर्टेंट है. डजंट मैटर विच पेपर आर यू राइटिंग, कौन सा कोर्स है आपका, ये सबको आएगा, आएगा ही आएगा. और आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो यू गो एंड चेक प्रीवियस ईयर पेपर. 2020 पेपर इज अपलोडेड ऑन निफ्ट वेबसाइट एंड 21 पेपर आप किसी स्टूडेंट से मांग सकते हो. आपको पता चल जाएगा कि इन सब चैप्टर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा. देयर इज नो एक्सेप्शन. If there are only 10 questions in MFM, तो हो सकता है they will not ask 1 question from ratio, बाकी सबसे पूछ लेंगे और नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट आएगा ही आएगा. There are some chapters जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इन द सिलेबस, लाइक पार्टनरशिप. अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको आता है, तो यू कैन डू गुड इन दिस चैप्टर कॉल्ड पार्टनरशिप. देन pipes and cistern, completely based on work and time concept. और क्या होता है? boats and stream, concept of speed, time and distance. And there is one more, that is called mixture and allocation.
ये चैप्टर भी सिलेबस में जो B.FTech के लिए आएगा ही आएगा, बाकी के लिए नॉर्मली नहीं आता है। ओके यस, आज के लिए इतना काफी है। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? मुकेश सर, is anyone else coming live? Do we need to continue this YouTube live? Okay, till